हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोर बायोलॉजी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट। कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट क्या होता है और इस टेस्ट का क्या यूज़ है जेनेटिक्स में। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। एडवर्ड लुईस जी ने पहली बार कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट किया था 1940 में, जब वो फ्रूट फ्लाई की स्टडी कर रहे थे तब। To identify whether a single gene is responsible for a particular trait or several genes are responsible for that trait, complementation test is used. इसका मतलब है, अगर हम ये पता करना चाहते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर ट्रेट के लिए एक सिंगल जीन रिस्पॉन्सिबल है या फिर बहुत सारे जीन्स रिस्पॉन्सिबल हैं, तो उसके लिए भी हम कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट करते हैं। इसके अलावा इस टेस्ट से हम ये भी पता कर सकते हैं कि दो म्यूटेशंस जो सिमिलर फिनोटाइप कॉज कर रही हैं वो सेम जीन में प्रेजेंट है या फिर डिफरेंट जीन में प्रेजेंट है। Hence, this complementation test determines if two mutations are present in the same gene or in different genes. Complementation test को हम Cis-trans test भी कहते हैं, जिसमें cis का मतलब होता है कि mutations are present on the same chromosome and trans का मतलब है mutations are present on different chromosomes. Complementation test is only applicable for homozygous mutation condition. It means this test detect only homozygous mutations that are recessive. It means when both the alleles of a gene are mutated, then only the mutation will be expressed. अब देखते हैं कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट में क्या करते हैं। सो इन दिस टेस्ट two mutant organisms are crossed to produce F1 generation. Now, if F1 generation have a wild type phenotype, then complementation occur and the mutations were in different genes. But if F1 generation have mutant phenotype, then the mutations were in same gene. It means that जब हम दो म्यूटेंट स्ट्रेन को क्रॉस करेंगे टू प्रोड्यूस F1, नाउ अगर F1 में हमें वाइल्ड टाइप फिनोटाइप देखने को मिलता है तो कॉम्प्लीमेंटेशन हुआ है और जो म्यूटेशंस हैं वो डिफरेंट जीन्स में प्रेजेंट हैं। लेकिन अगर F1 जनरेशन में हमें म्यूटेंट फिनोटाइप देखने को मिलता है तो कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है और जो म्यूटेशंस हैं वो सेम जीन में प्रेजेंट है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ फ्लावर कलर. सो वी हैव वाइल्ड टाइप फ्लावर्स दैट आर पर्पल एंड म्यूटेंट फ्लावर्स दैट आर वाइट. सो white flower in the presence of gene A produces white flowers and in the presence of gene B produces purple flowers. So here gene A produces product A that result in white flowers and gene B produces product B that result in the formation of purple flowers. So यहाँ पर जीन A एंड जीन B दोनों ही रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पर्पल फ्लावर्स. नाउ कंसिडर द केस फर्स्ट. इफ जीन A इज म्यूटेटेड, अगर जीन A म्यूटेट हो जाता है तब क्या होगा? सो हियर देयर इज अ वाइट फ्लावर. नाउ व्हेन जीन A गेट्स म्यूटेटेड, सो प्रोडक्ट A इज नॉट फॉर्म्ड and it result in white flowers. Now even in the presence of gene B, it will produce white flowers because here we require both gene A and gene B for the production of purple flowers. In case second, if gene B is mutated, then white flower in the presence of gene A produces white flowers, and when gene B is mutated, so product B is not formed and hence it result in the formation of white flowers. So, in both the cases, when either of the gene is mutated, then it result in the formation of white flowers. On crossing two mutated white flowers, in F1 generation, we get purple flowers. It means that genes A and B complement each other, hence complementation occur and mutations
are present in different genes. Let's take another example of fruit flies. So the flies that are wild type develop wings, and the flies that are mutant do not develop wings. In case 1, when mutations are in separate genes or different genes. So इस फिगर में दो mutant flies के बीच में क्रॉस दिखाया गया है. So the first one has the mutation in gene 1 and gene 2 is normal, and the second fly has mutation in gene 2 and gene 1 is normal. Here MA and MB represent the mutations. So on crossing these two flies in F1 generation, we get the flies that are of wild type, because in F1 flies, one normal copy of each gene is present, hence complementation occur, and the flies are of wild type and develop wings. It means that mutations are in different genes, and mutations are not alleles of the same gene. In case 2, when mutations are within the same gene but at different locations, then on crossing two flies having mutation in the same gene, that is gene 1, but at different location, and gene 2 is normal in both. So in F1 all the flies are found to be mutant because gene 1 is mutant in all the cases while gene 2 is normal. Hence, no complementation occur, and the flies are mutant and do not develop wings. It means that the mutations are present in the same gene, and mutations are alleles of the same gene. So, आज हमने कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट के बारे में जाना. कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जिसको हम जेनेटिक्स में यूज़ करते हैं टू डिटरमाइन वेदर टू म्यूटेशंस आर प्रेजेंट इन द सेम जीन और इन डिफरेंट जीन्स. इस टेस्ट में हम दो म्यूटेंट ऑर्गेनिज्म को क्रॉस करते हैं to get F1 generation. Now, if the F1 offspring have wild phenotype, then complementation हुआ है और mutation different gene में present है. But if the F1 offspring have mutant phenotype, then complementation नहीं हुआ है और mutation same gene में present है. I hope this topic is clear to you. If you like the video, then share with your friends and subscribe the channel.